Dear friends, welcome to Rendezvous with the Star program on day 6 of Asian Literary Society's Navras 2021. As you know, the Asian Literary Society's annual Navras 2021 festival is a 9 days online festival of art, culture, and literature. And today we are here with three eminent classical dancers, Dr. Madhuri Menon, Isha Dasji, and Rahul Varshney. So along with me, we have Anita Chanji, administrator of ALS and an eminent author. Now I would like to introduce our guest today. So Dr. Madhuri Menon is a Bharatanatyam dancer and has been trained by Padma Shri Guru Srimati Geeta Chandran in New Delhi. Madhuri has been performing Bharatanatyam in the United States since 2002 and is the artistic director of the Natya Marga School of Dance in Florida, USA. Madhuri holds a PhD in development psychology and is a professor in the Department of Psychology and Neuroscience at Nova Southeastern University. Madhuri's academic research focuses broadly on processes of psychosocial development during the period of middle childhood and emerging adulthood, and she has conducted studies and published papers on self concept, self esteem, attachment, aggression, gender identity, academic achievement, and parent child and peer relationships. So, welcome Madhuri in Randu with the Stars program. Thank you, Manoj. Now, our second guest is Mrs. Isha Das. Isha Das is an Odissi dance practitioner of Gurudev Prasad Das Gharana, trained under Guru Srimati Srivastava. Isha Das is also a graded artist at the University. She has been awarded 10th National Women Excellence Award by NWEA for Young category and a scholarship from CCRT, Ministry of Culture, Government of India. Welcome Isha Das ji in Rendezvous with the Stars program. Thank you so much. Our third guest is Rahul Varshney. Mr. Rahul Varshney is a young and promising dancer of Gurudev Prasad Das Gharana. He began his journey in Odissi dance at the tender age of 5 under the tutelage of Srimati Jyoti Srivastava, an eminent Odissi dancer. Rahul aims to gain expertise in the Tandava composition of Gurudev Prasad Gharana so as to take Odissi classic dance one step forward towards revival of the dance creations which are on the verge of extinction. Dance is his religion and this reverent passion can be seen in his performances. His dance is full of vigor and power, which is commensurate with the dance in the masculine form. Rahul Varshney is a Nitya Visharad, an ICCR impaneled artist, graded artist from Delhi Doordarshan, senior scholarship holder from Ministry of Culture, Government of India, and recipient of junior scholarship from CCRT as well. Welcome Rahul in Rendezvous with Stars program. Thank you. Now, my first question is from Rahul. So, there are many classical dance forms. Why did you choose Odyssey? Well, thank you so much for such an introduction. Uh, I'm really glad and honored to be a part of this session and sharing this platform with other distinguished guests. Uh, well, the question you have just asked, uh, why I choose Odissi uh, and not any other art form. Well, you must have heard this quote many times that you do not choose art, but art chooses you. And in my case, it was quite relevant, I'll say. So I was introduced to Odissi at the age of 7, not 5. Now I'll come to that why it is mentioned 5. Before that, I was learning Hindustani classical that I started learning at the age of 5 under the same guru from whom I've later started learning Odissi. So usually at this age, when you get to learn something, and that too classical, it is maybe because of the choice of your parents, or maybe you are a part of some rich traditional family which is connected for the generations, right? So in my case of learning Odissi dance, both the options were irrelevant. My mother enrolled me for music classes purposely, and later it turned into something else.
So my Guruji used to teach Odissi soon after our music classes used to get over. So I get more influence towards dancing than singing, and that's how everything started. That's So I nice. can proudly say that it was the dance that chose me, and it's not me that chose the dance. And when I started learning Odissi, I never feel like exploring or trying any other dance form. Well, that doesn't mean that we didn't get chance to experience or see any other art forms. Nor I'm discriminating, of course. But the kind of satisfaction, the kind of connection that I feel when I'm doing Odissi, I never feel the same for any other dance form. And we were quite lucky that from the very beginning, our Guruji used to take us for the programs of not just Odissi, but various other art forms, and we used to enjoy that. I used to enjoy that back then, and I used to enjoy it right now also. So overall, that satisfaction that I get from Odissi was somehow missing in when I was experiencing and when I was watching other art forms. So that's how it came in my life. That's nice. That's nice. Thank you so much, Rahul. Now, my second question is to Isha Das ji. What is dance according to you, and what does it add to the life? Thank you, and first of all, congratulations to both of you for organizing such a wonderful festival. And like explaining what does dance mean to me is quite difficult because I learning dance when I was 3. So it's been an integral part of my life for all my childhood, adulthood. Dance is something that was always there with me. So, what I feel apart from all the health benefits, proven health benefits that dance bring along, it's the source of joy and happiness for me. It's the time when we are on stage that we are in that present moment. We don't like we are not bothered about the past or the future. We can experience so many emotions at the same time. We can experience so many characters and like it has imbibed the spiritual growth in me as well because the teachings, the learnings, the philosophy that is there behind the dance form, behind any art form. Actually, there's a certain discipline in which we learn art form, especially the classical art forms. So that has helped me to grow spiritually as well, and it is the ultimate source of joy and happiness because we can, it's not just limited to happiness or something. We can dance in uh, when we are feeling any emotion. We can dance in happiness, we can dance in when we are sad as well. So like it's a part of my life. Great, great. Thank you so much, Isha Das ji. And my next question is to Madhvi, since he has been in the US for last more than 20 years. So this is the most expected question. So how is Indian classical dance viewed abroad? It's a great question. It's actually okay. At one level, I guess classical art forms from across the world are viewed through the lens of the exotic. But that being said, there's a lot of interest, genuine interest in Indian dance forms, classical dance forms. Typically, when we have festivals of India or we have recitals, we have a lot of Caucasian Americans, African Americans who attend these. They don't know anything about it, and they want to sort of learn a little bit more about it, sort of get their feet toes a little wet in terms of what it is. And they do. I have conducted several lecture demonstrations and over the years, and a lot of these they have been at universities, they've been at preschools, they've also been at old age homes. But in all of these venues, there have been so many people who ask so many questions. In fact, my presentation might be over, but I might be spending about 15, 20 minutes afterwards speaking with people because they are just so, it's almost like an immersive experience for them when they're there. And of course, they're coming to this almost cold. They have no, almost blind. They don't know very much about it. And when they come and they are, of course, they are enthralled by the visuals, by the movement, because
Indian classical dances are very different from even Western classical dances like ballet in terms of the themes which are presented, in terms of, as Isha said, there is the spiritual quotient, which is sort of part and parcel of the Indian classical art forms, primarily because a lot of them did originate in the temples. So there is a very strong mythological basis as well from the epics and the Puranas, and so people are very interested in that. So I guess to answer your question, yes, it's very positively viewed. There's a lot of excitement as well when they get to see a classical performance. That's great. That's great, Madhuri. Thank you so much. Now, my next question is to Rahul. What is the most challenging thing if one plans to pursue a career as a dancer? One. Yes. Well, I mean that's again quite a common question, and especially being a male dancer, I have to answer it most of the time. So I believe that ups and downs are a normal part of every person's life. Okay, so we cannot complain all the time, right? So ups and downs are always there in your life, and being a man, I'll take my example. Being a man learning classical dance was not easy. Now pursuing it as a career is again challenging, and this is something not happening with me only. This is quite common with almost every other male dancer, and in most cases with females too, right? So, but again, the point is what satisfies you the most, right? It depends. The definition of satisfaction in your mind is completely, again, I mean, it's individual perspective. For some people, it might be materialistic. For other people, it might be something beyond that. So that completely depends that how you want to frame your life and how you want to move forward. But I'm glad that at least I'm not a part of that 8 hour desk job. I think that would be more challenging for me rather than doing what I'm doing today. So in that case, I always believe that pursuing your career, whether in a dance field or any other creative field, is a little bit challenging though, but it's not difficult. I mean, it's just that you need to focus, you need to work hard, and we must understand that we are living in a time where you can easily turn your hobby into a profession. If you'll not do it today, maybe there's no other better time. Yeah. Thank you, Rahul. Now, my next question is to Ishaji. What would you like to accomplish as a dancer? So, what are your dreams? What do you want to have? Um, for me, for myself, it would be balance because dance. Because I feel that dance has huge impact on my life. It's what I am today, with the way I think, the way I do my work. That everything has the dance has huge impact on it. Not just in creative field, like I am into software industry. I currently am working as a project manager also. So everything I do there as well is somehow the something or the other thing I've learned through dance journey only. So and if I'm able to like carry forward the teachings, these culture, this literature forward to the next generation or our generation, and make them comfortable with our classical art form, because somehow there are a certain part of the generation that feels that classical art form is boring and are not with the new generation. So if I'm able to like influence them, any even if one of them, to and carry forward our legacy, so that will be my that I'll consider myself successful. That's nice, Ishaji. Definitely, you will be very successful. You will accomplish all over what you aspire. So, my question now is to Madhuri ji.
What are the most important traits a dancer should have? I'm asking this because I see you a kind of very perfect dancer with, very, every your all mudras and the expression looks so flawless. So I just thought to ask this question to you. What are the most important traits a dancer should have? Well, first of all, thank you for your very kind words. Um, in terms of what are the traits for a good dancer, well, I guess first of all is training. To have, one needs a very strong foundation, a very strong base, and only then can one branch out. And that, of course, that's a concerted practice of several years. Classical dance forms require training for at least 8 to 10 years before one is at a position where one can even, kind of get on a stage and perform. To just get the gestures and the body movement and we call it Angashuddhi, to get all of that. So we need at least, so first of all, there is concerted practice. There is training, which is the most important thing. And that is, of course, to find a guru, to have a teacher, because we are what we are only because of our teachers, because of their generosity of spirit that they have taught us and brought us to where we are right now. So that, of course, is the first thing. But other than that, so your training, that is the background. I mean, like, to be a tree, to branch out, one needs to have strong roots. So the foundation is extremely important. But other than that, to continue, I guess one needs perseverance. This is not for the faint-hearted. One needs, as Rahul said, one needs perseverance. One needs a high degree of patience to keep going. Dedication along with that, and I call it my second D. You need a high degree of discipline as well to keep at it, because we are living in a generation where, especially children, and I guess people said that even when I was a child in the 80s and 90s, about how, the youth of today want instant gratification. And so it's like, oh yeah, let's do this, because the classical arts require it's a long journey. So it's not instant noodles that we'll get it in 2 minutes. So to keep with it, to keep practicing, to keep doing the riyaz, whether one is performing or not. And I guess that is important. And also, I guess at the end of the day, to do it because it brings us happiness, as Isha said. It's something that comes from within. So we do it because it is giving us happiness. That's nice. That's nice. Anita ji, I think you have set up questions. So would you like to ask this with our eminent guest? Good evening to everyone. I welcome you all. And Asian Literary Society is celebrating Navras. भारत में नृत्य की जड़ें प्राचीन परंपराओं में हैं। मैं अभी रुख आपका हिंदी की तरफ ले चलती हूँ, क्योंकि जो नृत्य हैं, जो कलाएं हैं, वो हमारे भारतवर्ष में कितनी प्राचीन हैं, उस पर आते हैं। भारत में नृत्य की जड़ें प्राचीन परंपराओं में हैं। इस विशाल महाद्वीप में नृत्य की विभिन्न विधाओं ने जन्म लिया है। प्रत्येक विधा ने विशिष्ट समय व वातावरण के प्रभाव से आकार लिया है। दक्षिण एशिया में प्राचीन शास्त्रों के अनुसार नवरस मानवीय भावनाओं का प्रतीक है, जिसमें प्रेम, हास्य, करुणा, क्रोध, साहस, भय, विभद, आश्चर्य और शांति शामिल है। जैसा कि हम पिछले 6 दिन से नवरस हर दिन एक रस लेकर आते हैं, तो आज का जो रस है वो विभद रस है, जो कि घृणा, जिसके द्वारा घृणा के रस जिसको कहा जाता है। लेकिन हमारी जिंदगी में ये रस बहुत ही कम हम चाहते हैं, पर होता है, इसलिए ये एक रस है। तो मेरा जो एक सवाल है, और मैं अपना एक सवाल लेकर आई हूँ राहुल जी के लिए। नृत्य सिर्फ एक कला ही नहीं, ये तो मन के बसे भावों की स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की दशा है, जिसमें डूबकर एक नृत्यांगना उस परम सुख की अनुभूति को प्राप्त करती है या करता है जो ईश्वर के समान है। तो मेरा जो सवाल है वो कृष्ण के बाल रूप की प्रस्तुति को किस रस में व्यक्त किया जा सकता है? राहुल जी, आप इसको कुछ एक मुद्रा में बताइए। Thank you, Anita ji.
सबसे पहले तो मैं उसी से कनेक्ट करूंगा जो भी आपने कहा कि जैसे आज का आपका नवरस का जो आपका सीरीज चल रहा है उसमें से आज आपका जो चूजन रस है वो डिस्गस्ट है, घृणा है ना। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते घृणा। अब देखिए यहीं पे इम्पोर्टेंस आती है आपकी परफॉर्मिंग आर्ट्स की। जो हम अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते वो हम स्टेज पे देखना चाहते हैं। यहाँ पे एक कलाकार का रोल बढ़ जाता है, ठीक है। हम दुख अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते, पर अगर आप इमेजिन कीजिए आप एक चलचित्र देख रहे हैं, एक आप एक मूवी देख रहे हैं, पर आप उसमें सारे रस देखना चाहेंगे, भाई वो तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब उसके अंदर थोड़ा हास्य भी हो, थोड़ा श्रृंगार भी हो, थोड़ा सा उसमें वीरता की तरह हीरो एक नायक निकल के आए, थोड़ा एक्शन करे, विलन को मारे और फिर शांत रस के साथ अपनी नायिका को लेके निकल जाए, है ना। तो ये सारे रस जो हैं आपके, इसीलिए देखिए कलाकारों का और कलाओं को बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमें ये समझने की जरूरत है कि, और यही अभिव्यक्ति है, रस हमारे जीवन में है, बिल्कुल है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, मैं 2 मिनट आपसे चाहूंगा, मैं क्वेश्चन पे आपके आऊंगा। देखिए जैसे कि अभी डॉक्टर मैनन बात कर रही थी वेदों की और शास्त्रों की, और हम भी रिलेट करते हैं अपने जीवन को। मैं सिर्फ कलाओं के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि मानव के जीवन का आधार वेदों से जुड़ा हुआ है। तो जो भी कुछ आया है हम कहते हैं वहीं से हमने सीखा है। हम उस संस्कृति को सबसे जीवंत संस्कृति मान रहे हैं। तो आप ये समझिए कि हर जगह, चाहे वो पहले के समय के आपके वेदों के समय के यज्ञ की रिचुअल्स क्यों ना हो, उसमें भी स्थान दिया गया है कलाओं को। पूर्व रंग में आप देखते हैं, यज्ञ के पार्टिसिपेशन में आप देखते हैं, सामगान में आप देखते हैं। तो हर जगह वो जुड़ा है, हर जगह वो हमारी जिंदगी से जुड़ा है, और वो एक अभिव्यक्ति आपको कराता है। और इसीलिए बड़े मुनियों ने, स्कॉलर्स ने, जैसे नाट्य शास्त्र वगैरह में भारतीय कलाओं को, नृत्य कलाओं को मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा मान के उसको बनाया है। बिल्कुल। तो मैं आपको एक क्वेश्चन, जैसा आपने पूछा कृष्ण के बाल स्वरूप को किस रस में, हाँ, तो देखिए सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। तो जो कृष्ण है वो तो सत आनंद है, तीनों पापों के विनाशक हैं, इस सृष्टि के जो है उत्पत्ति कारण है, और उनको तो किसी एक रस में जो है डाल देना या किसी एक रस की अभिव्यक्ति उनमें से करना बड़ा ही मुश्किल काम है। वो तो खुद रास लीलाओं में इतने निपुण हैं कि हम उनको किसी एक रस में नहीं समझ सकते, नहीं डाल सकते। बिल्कुल। पर फिर भी जो हम उनका बाल स्वरूप जब देखते हैं तो हम मोस्टली उनको यशोदानंद के रूप में देखते हैं, और जब माँ यशोदा की बात आती है तो वात्सल्य रस निकल के आता है, राइट। आप जब एक छोटे बच्चे को, बाल स्वरूप को देखते हैं, हमारे घर का हर छोटा बच्चा हमारे लिए एक छोटा कन्हैया है, एक छोटा कृष्ण है, बाल स्वरूप है। हम जब उसकी तरफ देखते हैं तो हमारा वात्सल्य भाव निकलता है, वात्सल्य रस निकलता है उसकी, ठीक है। देखिए अब आपको इस तरह समझना होगा कि श्रृंगार को तो आपने एक मुख्य रस कह दिया, एक प्राइम, जैसे आपके प्राइम कलर्स हैं वैसे आपने श्रृंगार को एक प्राइम रस कह दिया जिसमें से सब निकल रहे हैं। पर अब उसी श्रृंगार में जब ममता जुड़ जाती है, जब फिक्र जुड़ जाती है, चिंता, अगर आप कृष्ण की बाल लीलाओं को देखें तो आप समझ पाएंगे भाई कृष्ण ने पूतना राक्षसनी को का वध कर दिया, कृष्ण ने मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड अपने मुख के अंदर दिखा दिया, तो बाकी सारे लोग उसको चमत्कार समझने पर मां नहीं समझ रही। यशोदा को चिंता है, पूतना का वध करके भी यशोदा ये नहीं मानने को तैयार कि मेरा बालक जो है कोई असामान्य बालक नहीं, असामान्य बालक है। वो कह रहा नहीं, मेरा बच्चा, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही है
कि प्रभु मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, क्या ऐसा हो रहा है कि इसको इस तरह की शैतानी शक्तियों का सामना करना पड़ रहा है एंड व्हाट नॉट। ये माँ है, ये वात्सल्य है, ये कोई और नहीं सोच सकता। ये वात्सल्य रस जो है, ये यशोदा से आप कनेक्ट करें, जब आप कृष्ण की बाल लीलाओं का जब जिक्र करें तब तो देखेंगे वो पूरा भरा है वात्सल्य रस से। जो भी कृष्ण को देखता है उसके अंदर एक ममता का भाव, के छोटे स्वरूप को याद करते हैं तो एक ममता का भाव आता है। हम बच्चे को देखते हैं, इसको स्नेह से देखते हैं, उनकी हरकतें देखते हैं। बच्चा कुछ छोटा बच्चा कुछ शैतानी भी करता है तो हमें उस पर गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता, प्यार ही आता है। वही शैतानी अगर हम लोग करें तो आपको क्रोध आएगा, क्योंकि हमने वो बाल अवस्था को हम पार कर चुके हैं और अब हम लोग एक अलग अवस्था में हैं। पर देखिए, माँ बाप के लिए तो हम हमेशा ही उनके बच्चे रहते हैं, और वो वात्सल्य रस ईश्वर ने जो दिया है वो मोस्टली पेरेंट्स में दिया है। गुरु को भी वात्सल्य रस का पारक माना जाता है, क्योंकि वो भी हमें एक बच्चे की तरह ही हमारे को बड़ा करते हैं, हमारे अंदर ज्ञान गंगा का हमारे अंदर जो है निर्वाहन करते हैं। तो ये वात्सल्य रस से निकल के आता है। अब देखिए, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको वहां से भी लेके दूंगा। देखिए, ये सब जो रस की हम बात कर रहे हैं, मुख्यतः 8 भावों के अंदर हम खेलते हैं। मैं शांत को भी नहीं काम कर रहा हूँ, बिकॉज नाट्य शास्त्र में शांतों के रसम की व्याख्या नहीं है। वो लेटर इन्वेंशन है, वो लेटर एडिशंस हैं, और आधार स्रोत आपका फिर वही है, श्रृंगार। उसी से आपका वात्सल्य आ गया, उसी से आपका भक्ति रस आ गया। भक्ति रस भी जोड़ा जाता है, श्रृंगार भक्ति भी जोड़ा जाती है। मीरा को जोड़ दिए तो श्रृंगार भक्ति आ गई। शबरी, माँ शबरी को जोड़ दीजिए तो कुछ लोग उसको भक्त की नजर से देखेंगे तो भक्ति रस है, कुछ लोग उसको एक माँ की नजर से देखेंगे तो वात्सल्य ही है। ये भी भाई, एक माँ जैसे अपने बच्चे को माँ के समान, वो अपने बेर की कुछ भी गलत ना चला जाए राम के पास, वो उन बेरों को चख के कि नहीं मेरे बच्चे को कुछ गलत ना चला जाए, वो उस ममता के साथ उनको खिला रही है। अब आपका नजरिया है ये। देखिए, अगेन फिर वही बात आ रही कि भाई, बीइंग अ परफॉर्मर, आप क्या देख रहे हैं और आप उससे क्या अभिव्यक्ति ले रहे हैं। ये एक बहुत एक कन्वर्सेशन चलती है बिटवीन द ऑडियंस एंड द परफॉर्मर, और हर कोई एक रंगमंच का पार्ट है। मैं अभी आपको देख रहा हूं तो मेरे मन में क्या रस आ रहा है, और अभी आप मेरी बात सुन रही हैं तो इस बात से आपके मन में क्या रस आ रहा है ना। तो बाल स्वरूप को मेरे हिसाब से हम लोग वात्सल्य के साथ जोड़ सकते हैं। और वैसे तो जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि कृष्ण तो लीलाधर हैं, उनकी हर लीला एक अलग रस, हर मिनट एक अलग रस निकालती है। तो ये तो सुबह से लेकर शाम भी हो जाए तो हम इस पे चर्चा खत्म नहीं कर सकते। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने वात्सल्य रस का व्याख्या की। और कृष्ण को हमने इसलिए लिया था कि उनके अंदर सारे रूप हैं, और वो आपने हमें बताया भी कि किस तरह से। एब्सोल्युटली जी, खुद तो अनंत मेरा नाम पे एक हैं, जो कि इटर्नल। तो डॉक्टर माधवी, for you one question: what is the similarity or relationship between yoga and Bharatanatyam? Please. Okay, when we actually, there is, okay, in terms of similarities, there is a lot of the body movements and the body postures that we are taking in our classical Indian dances. They do seem to have linkages with yogic poses, with yoga poses. We do, in terms of body preparation, we do actually engage, we do practice yoga as part of our warm-ups to actually, so we spend about 15, 20, 30 minutes doing these different poses as part of a longer warm-up session, and that actually helps prepare the body to sort of continue with dance, because it does take quite a lot. An evening length performance could be 1.5 to 2 hours, and in which one item might be 45 to 50. One item could be, the longest one could be 45 or 50 minutes long. So in order to sort of keep that going, we do pranayam, we do various yoga poses as well. We also, and even meditation sometimes is extremely helpful, just to sort of ground us, to get us that focus to go in. And I don't know about Rahul and Isha, but when I am on stage, for me, it's almost an out-of-body experience. As Isha said, we're in the moment, it's very much in the present.
when I dance and somebody asks me, what did you do then? I can't even respond to that because I don't know what I did at that time. Because when I am on stage, I am actually having this sort of, I'm just immersed in the dance and I don't really remember what I did, when I did, how I did. It just happened. So I guess yoga is definitely helping with that. And it does, of course, help us in preparing our body to take various poses. And so I guess that is, as far as I know, that's how I see the link between yoga and Bharatanatyam. Yeah, so Beautifully. Isha, yeah, thank you so much, Isha ji and Thank Madhuri you. ji. Isha ji is currently got disconnected, so before she will come back again, then Anita ji can continue the question with her. So Madhuri ji, could you show few expressions in meantime to us? I'm not sure what to say, expressions or mudra, but can you show something for us? Okay. Any mudra, like I'll do a couple of lines. This is from a Padam, which is basically an Abhinaya piece. Now, in this, we were talking about Lord Krishna. Rahul was talking about the Bal Roop of Krishna. This is now, of course, Krishna as he is he is a man of so many colors and so many different rasas are present in Krishna. Now, in this padam, it's actually Krishna has been dallying with other women, and the Nayika is a little upset that Krishna has gone off, and now he's actually come to her house. This is in Telugu. So it goes. Indendo chittivira aladaga illu ividi kaadu o poda ಎಂದೆಂದೂವರ ಚಿತಿವಿರ ಅಲದಾಗ ಇಲ್ಲು ಇವೀರಿ ಕಾದು ಓಪೋಡ ಎಂದೆಂದು ವರ ಚಿತಿವಿರ ಅಲದಾಗ ಇಲ್ಲು ಇವೀರಿ ಕಾದು ಓಪೋಡ ಎಂದೆಂದು ವರ ಪ್ರೀತಿವಿರ ಅಲದಾಗ ಇಲ್ಲು ಇವೀದಿ ಕಾದು ಓಪೋಡ Very nice, very nice, awesome, awesome. so beautiful, so beautiful. बहुत Anita ही ji, जी जी बिल्कुल। मैं अपने क्वेश्चन का ईशा जी ईशा जी आ चुकी है। ईशा अपना माइक ऑन प्लीज, वॉइस। एक सेकंड मैं म्यूट करूंगा। ईशा जी, you have to unmute your डॉक्टर mic. माधवी, आपने जो इतना अच्छे एक्सप्रेशन दिए, लगता है कि अब हमें भी डांस सीखने का मन हो रहा है। शायद हम सीखेंगे कि नहीं लेकिन आप लोग को देख करके लगता है कि अब हमें क्लास जाए। And everyone doesn't have to be a performer with dance because there are endorphins which are released. ईशा थोड़ी सी देर बाहर गई और हमें एक और नई मुद्रा हमें देखने को मिल गई डॉक्टर माधवी के द्वारा। तो ईशा, हम आपसे एक क्वेश्चन लेते हैं। आ रही है मेरी? जी आ रही है, लेकिन आपको आ रही है हमारी आवाज? जी हाँ, ईशा कंटिन्यू करें, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। अनिता जी अपना क्वेश्चन ईशा, हाँ ईशा, रौद्र रस का एक अभिनय हमें दिखा, बताइए, जो शिव जी के तांडव एवं दुर्गा शक्ति के रूप की मुद्राओं को हमारे दर्शकों
आपने जैसे रौद्र रस कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है। ईशा जी, सो कनेक्टिविटी की इशू है। ईशा जी, विल कम बैक टू यू। राहुल इन जी, या राहुल जी, मैं रौद्र रस के लिए जैसे कि मैंने अपने प्रस्तुति का छोटा सा पार्ट भेजा था आपको, जो आपने रौद्र, जिस दिन हमने रौद्र रखा था नवरस, उस दिन प्रेजेंट किया था। तो मैं आपको काली, आपको आवाज आ रही है? जी, आ रही है। आ रही है। ईशा, जी हाँ ईशा, प्लीज कंटिन्यू। राहुल जी, आपके पास भी एक क्वेश्चन आ सकता है, और जो ईशा की कनेक्टिविटी है उसको देखते हुए आप हाँ हमें फिर कुछ रौद्र रूप रस का या हाँ आप हमें शिव जी की कोई तांडव से रिलेटेड कोई रस के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं और और बहुत कम साथ ही टाइम में उनको प्रस्तुत भी करें जितना आप एक्सप्रेशंस। जी कुछ हाँ, क्योंकि कम टाइम में वो चाहते हैं कि हमें बहुत सारा मिले, तो जितना हो सकता है आप प्लीज। कोशिश रहेगी, बाकी हम समय सीमा को भी समझ सकते हैं। देखिए, आपने शिव की बात करी, तो हम शिव को हमेशा एक ही रूप में देखते हैं, वो रौद्र। जैसे हमें समझ में आता है शिव, तांडव, तो ये थोड़े से मैं बात करूंगा आपसे कि हम जैसे ही शिव और तांडव को जोड़ते हैं तो एक निकल के आता है कि कोई एक फ्यूरियस डांस होगा, अभी कोई कुछ अग्नि जलेगी, कुछ प्रचंड, कुछ वेग होगा, कुछ प्रलय आएगी और शिव नाचते हुए प्रकट हो जाएंगे, isn't it? पर देखिए, हमारे शास्त्रों में, क्योंकि नाट्य शास्त्र भी एक शास्त्र है, शास्त्रों के अनुसार तांडव की व्याख्याएं कुछ अलग है ना। उसको उद्धत कहा गया है, उसको सुकुमार कहा गया है ना। उसमें तांडव और लास्य के कॉन्सेप्ट को अलग नहीं किया गया। और कई बार हमें देखिए, हमारे द बेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग और गेट टू नो अबाउट इंडियन लिटरेचर इज कि उसकी स्टोरीज में बहुत डीप मीनिंग होती हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की मलाई को ले लेते हैं और अंदर के मंथन करना पड़ता है, अंदर का घी निकालने के लिए थोड़ा मंथन करना है ना। तो शिव का स्वरूप आप अर्धनारीश्वर भी जब देखते हैं तो वो भी यही बता रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ जो है अग्नि क्रिएट करने के लिए नहीं हूं, मैं सिर्फ प्रचंड हमेशा नहीं नाचता हूं, मैं एक योगी हूं, मैं एक मेडिटेटिव हूं, मैंने अलग अलग रूप लिए हैं, मेरे अंदर लास्य भी है, मेरे अंदर तांडव भी है, उद्धत भी है, सुकुमार भी है, सब है। और वही आपको उन्होंने एक इंसान के अंदर हमें जो एक सबसे क्रिएटिव उत्पत्ति मानी जाती है इस सृष्टि की, मनुष्य की, उसके अंदर भी सारे गुण हैं। तो जैसे भी ईशा आपको बता रही थी, आई थिंक शी इज बैक, उनका क्वेश्चन है, मैं सॉरी मैं थोड़ा सा ले लिया है, बट शिव देखते हैं हम तो हमें तांडव रूप की याद आती है। जैसे अब आप तांडव के रूप को समझिए, हम कई बार रिलेट करते हैं इसको एक छोटे से आइटम के साथ, हमें मंगलाचरण में इसको इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर रावण जो एक महान पंडित थे, उनके लिखे कुछ बोल हम लेते हैं। जटा कटा हसम भ्रमम भ्रमम निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरीश विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वला ललाट पट्टपावकः किशोर चंद्र शेखर रतिक प्रतिक्षणम मम। तो जब इस तरह की प्रस्तुतियां आप सुनते हैं तो आपके माइंड में एक आता है शिव डांसिंग फियरलेसली, उनके हाथ में डमरू है, वो एक अभय मुद्रा में है, गले में नाग है, या फिर नटराज के पोस्ट दिखते हैं जहाँ पे एक इटर्नल कॉस्मोस दिखाया गया है, एक हाथ में ज्वाला है, एक हाथ में डमरू है, एक पैर पे नाच रहे हैं, नीचे डेमन है। तो इस तरह से तांडव को बहुत रूपों से देखा जाता है। कृष्ण तांडव भी है, आनंद तांडव भी है ना। तो तांडव के कई रूप हैं, तांडव के आप बहुत रूप देखेंगे। और जैसे भी ईशा बता रही थी, वो पार्ट मैं नहीं दिखाना चाहूंगा, ऑल्दो ईशा से और मेरे से आपको काफी सारे आइटम्स बहुत कॉमन दिखेंगे बिकॉज ऑफ द सेम ऑफ कोर्स, बट
if Isha can continue with the question, I think that would be better. ईशा कि माइक इज माँ काली का दसापत्रा से शायद कुछ वो लेना चाह रही थी, तो उस पे आए तो जी अच्छा फिर जी, मैं तो आप ईशा हमें कुछ दुर्गा शक्ति पर हाँ, रौद्र प्राप्त रस व्यक्त को कीजिए। दिखाने के लिए जी। रौद्र, सबसे पहले सॉरी नेटवर्क इश्यू के लिए। इट्स ओके आपके And, फ्रेंड ने पूरी दोस्ती निभाई है। रौद्र रस को दिखाने के लिए मैं एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाना चाहूंगी, जो हम काली के लिए करते हैं, महाकाली ध्यान, जिसमें हम जैसे हमारे वेदों और शास्त्रों में जैसे डिफाइन किया गया है उनको कि मुंडमाला है और महिषासुर का वध कर रहे हैं, इन सब से रिलेटेड मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ। जयतु जय जय जयतु काली, धागिड़ किड़ तक रूपक राली, झमक झम झम दाति कंडा, काट कर धरि चंड मुंडा, जीव लह लह रुधिर टुंडा, धागिड़ गिड़ तक नाच प्रचंडा, माँ करली तब करल रसना, स्फूक असलिल लोल रसना, तुकस दसने स्फूट रसना, महमता महाकाल पर विपरीत नित्य रता। जैसे उनका वो खून से जो जीभ पे खून लगा है और जो वो वध कर रही हैं, ये उसका एक पोर्शन था जैसे हम दिखाते हैं। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, वेरी बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत थैंक यू। सुंदर। एकदम क्लियर हो रहा था। अगर हम रौद्र रस नहीं भी बोलते तब भी हम विजुलाइज कर पा रहे हैं कि आप ये रस में हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से आपने व्यक्त किया, इस अभिनय किया। थैंक यू सो मच। और अब कोई मनोज, एनी अदर राहुल जी, आप प्लीज आप ही हमें एक स्मॉल बाइट ऑफ परफॉर्मेंस अगर दें तो हमें बड़ी खुशी होगी। जी बिल्कुल कोशिश करते हैं कि कुछ आपके साथ शेयर कर सकें। तो मेरा क्वेश्चन क्योंकि कृष्ण से रिलेटेड अनिता जी ने पूछा था, सो आई स्टिक टू कृष्णा ओनली। एंड कृष्ण का देखिए बड़ा ही बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में। चाहे वो कवि वल्लभ हों, चाहे वो कवि जयदेव हों, इन रचनाओं से हम अपने आप को, चाहे वो भरतनाट्यम करें, चाहे वो ओडिसी करें, इन रचनाओं से आप अपने आप को पीछे नहीं कर सकते। तो ये आपका हमेशा एक इंटीग्रल पार्ट रहेगा कृष्ण। अब उसके बहुत सारे देखिए हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, वो हम आज इन टॉपिक्स को नहीं लेंगे, कभी इस बारे में कभी अलग चर्चा कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे कि क्यों, क्या डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या रीजंस हैं। बट खैर आज का हमारा वो टॉपिक नहीं है। बट फिर एक छोटी सी प्रस्तुति में आपको कवि वल्लभ की, जो बहुत कॉमन एक उड़िया अभिनय के रूप में हमारे ओडिसी डांस में आता है, छोटा सा अभिनय है जो हम मोस्टली सभी को सिखाते हैं। तो लागे गोपो दंडो मोनारे कालिया शोना, नित्य यही बाटे जाहूं रे कालिया। मैं छोटा सा प्रस्तुति आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी श्रृंगार रस है, पर यहाँ श्रृंगार रस में छोटी सी कंप्लेन है। आप जब कृष्ण से बात करते हैं, कृष्ण आपके समक्ष खड़े हैं, तो आप थोड़ा सा अपने आप को, अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा लेके जाना चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ी अपनी मेंटल एक्सरसाइज करें, कि अपनी विजुअलाइजेशंस को लेके जाएं बिल्कुल, और वापस पहुंचे वृंदावन में, जहाँ पे कृष्ण अपने बाल स्वरूप से उठकर अपनी टीन एज में हैं, वो नटखट कृष्ण हैं, वो गोपियों का रास्ता रोकते हैं, वो यमुना के तट पर जाके उनको तंग करते हैं, वो माखन चोर हैं। तो अब क्या है, ये स्थिति क्या है? अब ये देखा जाए तो भाई ये सारी वो स्थितियां हैं जहाँ पे भाई बहुत सारी कंप्लेंट्स होनी चाहिए, मगर जो वहां की गोपियां हैं, हर कोई, चाहे वो ग्वाल हैं चाहे वो गोपियां हैं, वो कृष्ण की उन लीलाओं का आनंद लेते हैं और आनंद लेना चाहते हैं, और वो वजह ढूंढते हैं कि किसी तरह हम नंद के घर जाएं, इस बहाने हमें कृष्ण देखने को भी मिलेंगे, इस बहाने हम कृष्ण को देख भी लेंगे, थोड़ी सी कंप्लेंट भी लेके चले जाएंगे। तो एक लहजा है उनका उनसे बात करने का, क्या है देखिए। तो लागी गोपो दंड मोनारे कालिया शोना, तो लागी गोपो दंड मोनारे कालिया शोना, तो लागी नजीबे जमुना, नित्य यही बाटे
जाहू रे कालिया। अब देखिए, नित्य यही बाटे जाहू रे, मैं तो रोज इसी रास्ते से जाती हूँ। यहाँ वो क्या कह रही है, तो लागी गोपोदंड मोनारे कालिया शोना। भैया मत जाओ वहां पे, कन्हैया जो हमारा रास्ता रोकता है यमुना के तट पे। अब वो कृष्ण से क्या कंप्लेन कर रही हैं, नित्य यही बाटे जाहू रे कालिया। भाई मैं तो रोज इसी से रास्ते से जाती हूँ, ये तो मेरा रास्ता है। नित्य यही बाटे जाहू, घटर कौड़ी मांगी रे कालिया। भाई तू घाट पे कौड़ी मांग रहा है, भाई आपके घर में आने के लिए आपसे कोई टैक्स मांगे तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? घटारा कौड़ी, अरे उससे कौड़ी मांग रहा है इसी घाट पे आने के लिए, मांगी रे कालिया मुरली बजाओ था। तू मुरली बजा, तेरा काम सुंदर मुरली बजाना है, उस मुरली को सुनेंगे। मुरली बजाओ था रे कालिया सोना। तो देखिए, कंप्लेंट भी कर दी और फरमाइश भी कर रही है यहाँ पे कि भाई कृष्ण तुम जाओ मत, तुम रहो, तुम मुरली बजाओ, हमारा रास्ता मत रोको, हमें जाने दो। तो वो आनंद है, इन सब चीजों में आनंद है। तो इस तरह की अभिव्यक्तियां हैं। फिर वो आगे बढ़ती हैं, फिर वो कह रही हैं, तू ही गोपोपुर राजा रे कालिया। अब यहाँ पे तर्क दे रही है, देखिए भाई तू तो गोपोपुर का राजा है ना। अब वो रिलेट कर रही है अपनी चीजों को। तू ही गोपोपुरो राजा, हिमंत सजरे मुरली बजाए। कितनी सुंदर मुरली बजाता है। आहुरी टीकी बजा रे कालिया सोना। थोड़ी सी और, उस थोड़ी सी मुरली और बजा दे और हमें जाने। तो इस तरह की आपको प्रस्तुतियां देखने को मिलती। वेरी नाइस, वेरी बहुत नाइस, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बहुत अच्छा। और एक मेरा एक और आपको सुनने के बाद एक अभी अभी मेरे अंदर एक क्वेश्चन आया है। सवाल ये है कि आपने उड़िया में ये अभिनय किया, अभी जो किया, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, हिंदी में आप एक्सप्लेन कर रहे थे, राइट राहुल जी? ऐसे ही था। जी जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल। अभी मैंने माधवी जी को जब सुना तो उन्होंने मलयालम में अपना तेलुगु में, अभिनय तेलुगु क्या, में, तेलुगु, सॉरी तेलुगु। तेलुगु, हाँ मतलब जो मैं इतना नहीं पकड़ पा रही हूँ सारी। तो क्या ये अलग अलग भाषाओं में हम सीख सकते हैं, जिस स्टेट का आप डांस सीखते हैं? या ईशा आप हमें बताएंगे, या माधवी जी बताइए, ये कुछ Absolutely. मुझे। The basic thing is the mudras, the expressions, like we are talking about Navarasas. Dance transcends all language. Because when we are dancing, it might be in any language, but the the crux of the matter is that we want to get what we are saying understood. We want others to understand that. So the hasta mudras, what's happening in the face, the body language, the facial cues, all of those are, I mean, Rahul and Isha loved watching what you were doing, and I don't understand a word of Oriya. But But one understands just yeah, by the movement of the face in terms of very what true. we may not understand the exact, the intricate details, but we get the idea. So in dance, language is not bad. language is just it's just by the way. And I mean, Bharatanatyam, I've done pieces in Hindi, in Braj Bhasha, in Telugu, Tamil, Sanskrit, Hindi. So Okay. it's, Very nice. You explained. but traditionally, yes, in Bharatanatyam, a lot of the traditional items were in Tamil and Telugu also, because where it's based in the Carnatic classical style of music, which where a lot of the compositions are in Telugu. But any language works. Amazing. So we Beautiful have discussion. actually, thank you so much, Madhvi ji. We have actually a limitation of the time. So a quick question to all of you before ending this. So I'll start with Isha ji. What would be your advice to aspiring dancer who are watching this program on ALS platform? I would say stick to dance, keep practicing, and be patient, and you will reap the rewards in many ways that we can't even imagine. And just stick to it, because हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब डांस छोड़ना एक बहुत इजी ऑप्शन लगता है, एंड ऐसे मोमेंट्स में भी स्टिक टू डांस.
Okay, great. Thank you so much, Very helpful. Ishaji. Rahul, the same question to you. यस मनोज जी, थोड़ा सा 2 मिनट आपके और लूंगा, क्योंकि अभी आपने डांस के साथ जो रिलेट करने की बात करी, एंड आई कंप्लीटली एग्री टू व्हाट डॉक्टर मैनन हैज जस्ट शेयर विद अस, दैट डांस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि डांस की उत्पत्ति का कारण क्या है, व्हाट वाज द ओरिजिन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ डांस. That was not just entertainment, right? It was the way to communicate. Even if we'll see Natya Veda, let's forget about Natya Shastra. Even if you go to the mythological story of the Natya Veda, the purpose was quite clear. That despite of having 4 Vedas already existing, why do we need the 5th Veda? Right? So again, it's absolutely, I completely agree. तो आपकी जो मुद्राएं हैं, हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं, अब वही आपका इसी से मैं आपकी से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ कि आपने योगा के बारे में पूछा था. योग भी तो यही है, यूनियन, जुड़ना. योग, being the performer, you are connecting to the audience. That is yoga. Anything that will connect you to what you are right now and to something else, it's yoga. That bring a sense of reality in you is yoga, right? So coming back to the question, कि अभी आगे जो लोग कर रहे हैं या फिर जो इसको करना चाहते हैं उनके लिए जस्ट कुछ वर्ड्स, तो मैं अपने नॉलेज एक्सपीरियंस पे जस्ट कुछ आपसे बोलना चाहूँगा that since dance is not just a physical exercise or just a therapy, it's an overall transformation, right? It is a lifestyle that we carry, isn't it? And that lifestyle connects you to the highest level of consciousness, to the state of enlightenment, that takes you to the state of enlightenment. जैसे डॉक्टर मैनन अभी कुछ समय पहले बता रही थी कि जब मैं स्टेज पे होती हूँ तो मैं कैसे होती हूँ, है ना, मैं एक अलग ट्रांस में हूँ. आई एम कंप्लीटली इन अ डिफरेंट ट्रांस, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे आसपास, right? This is the highest level of consciousness. This is the state of enlightenment. When you try to connect, when you leave your physical beings around and you are in some other trance, right? So अब प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे मनोज जी, अमृता जी, कि हम लोग देखिए, हम लोग एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं और उसमें जीने के लिए भी हमें बहुत सारी चीज चाहिए. पुरुषार्थों को हम नहीं पीछे छोड़ सकते, है ना. धर्म, अर्थ, काम, शास्त्र, मोक्ष तक हमें जाना है इस जर्नी को लेकर, धर्म से शुरू करते हुए. तो अर्थ भी है उसमें, सर्वाइवल भी डेफिनेटली जरूरी है. तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई, पहली चीज माइंड में आती है, देयर आर मेनी पीपल आउट देयर दोज हु वांट टू टेक डांस, म्यूजिक और एनी अदर आर्ट फॉर्म एज अ करियर, पर उसके साथ एक अर्थ जुड़ जाता है. पहली चीज माइंड में आती है, या फिर हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे सोसाइटी जो है वरीड होती है, अरे भाई क्या करोगे डांस करके, या आर्ट करके कैसे सर्वाइव करोगे. इजंट इट? एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कैसे सर्वाइवल होगा, कैसे पॉसिबल है ना. तो ये कॉमन क्वेश्चन है. तो देखिए, आर्टिस्ट आप तभी हो सकते हैं जब आपको इस क्वेश्चन को पहले एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी अपने अंदर. सो एक्सेप्टेंस इज वन थिंग. यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि भाई मुझे ये करके क्या मिलने वाला है. आप I cannot go back and blame someone else. I cannot go and blame my guru, my teachers, my parents कि अरे मुझे डांस में क्यों डाल दिया, मुझे कुछ और कराया होता. Even I'm a graduate from the university, I have done enough of education. So मैंने अपने बिल्कुल सेंसेस के अंदर डांस को एक करियर के में चुना है. मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया. I have not been forced to choose dance as a career, right? So we need to understand this thing, that if there is something is giving you so much in life, so I think little challenges seems okay to achieve, this much in life. And again, acceptance is definitely one of the things that you have to deal with, and you must understand that society is full of their own stereotypes, ideas, right? Anything that doesn't fit in their views is unacceptable. Right. It's completely up to you. And I strongly believe that life is too short to care what other things of you. It's too short. Absolutely right. I agree with you. I really wish if we were immortals, then it would have been the other way around.
Yeah, but we yeah. are models, right? So we should not give much think to what other people are saying. If you want to do it, do it. When there is a will, there is a way. It's not that, it's just underrated कि आप आर्ट कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, आप क्या कर रहे हो, that is more important. जैसे भी बाकी आप लोगों ने भी शेयर किया, the quality of work is important. Don't go on quantity of work, qualitative work, right? अब वो सिर्फ डांस में नहीं, हर फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में क्वालिटी पे ध्यान देंगे तो निश्चय आपका आप प्रगति के मार्ग पे आप चलेंगे. You'll be on the right path of progress for sure. Thank you, तो thank you यही so much. एडवाइस है, Yeah. क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वालिटी पे जाइए, एंड इट्स अ ब्राइट फ्यूचर. Thank you, Rahul. Very You nice. correctly told that we have to, focus on quality, and that is actually a very good message for our aspiring dancers. So now the same question to Madhvi, since he has been running a school for dance in US for so long. So this is a quite, a apt question for her. So what would be your advice to aspiring dancer? I really don't know what to say after Isha and Rahul have so eloquently put forth pretty much more than I could have possibly also said. So I just, whatever they said, I agree completely with them. I also think in terms of being a dancer, do what makes you happy. Yeah. Don't be worried about external trappings, as Rahul said. So if doing dance is what makes you happy, go for it. But of course, along with that, you can't just say, okay, I'm going for it and that's it. But one has to work extremely hard. And that's the case no matter what it is that you're doing. Be it dance, be it music, you want to be a mathematician, you want to be an actress, whatever it is, you have to work extremely hard to do anything. So don't be scared of hard work. Don't shirk it. And I guess I go back to the Bhagavad Gita actually. Karmanya vadhikaraste, just do what you need to do and don't worry about the end results. Because what you need to do, what you think you need to do, just keep going with that. And don't worry about the end goal. Am I going to get a Honda? Am I getting a Mercedes? That's immaterial. You need what is most important is your own sense of peace, your own sense of well-being and happiness in what you do. So just do what you need to do. Thank you so much, Madhvi. So, deepest gratitude to all our respected guests. Thanks for gracing Asian Literary Society's Navras 2021 program. I also want to extend a special thanks to our audience, and I see comments from them also. So, I would also like to thank Anita ji. Thanks again, Rahul, Madhvi, and Isha ji for today's session. The recording of this session will be uploaded on our official YouTube channel very soon. Thank you to all of you Thank for you so joining us today. Thank you so. Thank you so much. Thank you, Anita, Thank you. for organizing it. Bye-bye. Thank you so much.